Assalamu alaikum friends, welcome to the another informative video of the Danish Academy, skill test और टाइपिंग टेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको एक मुकम्मल गाइड फ्राहम की जाएगी जिसकी मदद से आप किसी भी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाउ टू 100% पास टाइपिंग टेस्ट ईजीली। किसी भी टाइपिंग टेस्ट को 100% किस तरह आसानी से पास किया जा सकता है। मेन पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द वीडियो वुड बी टाइपिंग प्रोसीजर टू पास द टेस्ट इजीली, देन हाउ टाइपिंग टेस्ट लुक्स लाइक, which tricks can surely boost up your typing speed up to 50 words per minute and more, which factors reduce the typing speed, how much time a typing test takes, and in the last, how to sit and what to wear for easy typing. Okay, here is an important trick for you to 100% pass the typing test easily. You must bring your personal keyboard on which you practiced along with you to the test center, because new keyboard always reduce your speed significantly. And for your information, all testing services including NTS, FPSC, PPSC, etc., they all allow you to use your own keyboard for test. दोस्तों, अपना कीबोर्ड अपने साथ टेस्ट सेंटर लेकर जाना मत भूलें, क्योंकि नए कीबोर्ड पर हमेशा स्पीड कम निकलती है और जितनी भी टाइपिंग टेस्टिंग सर्विसेज हैं, NTS, FPSC, PPSC वगैरह जितनी भी हैं, ये सारे आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना अपना पर्सनल कीबोर्ड अपने साथ लेकर जा सकते हैं और उस पर टेस्ट दे सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग की रफ्तार कैसे बढ़ाई जा सकती है? अच्छा, डेली 2 hours minimum typing practice with a short break of 5 minutes after every 20 minutes. Use Typing Master application to practice, because FPSC, PPSC, NTS, etc., they all takes test on Typing Master. Link of the free download of this application is given in the description of the video for if you don't have this application in your computer. दोस्तों, रोज़ाना कम से कम 2 घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस लाजमी करें और जिसके दरमियान हर 20 मिनट के बाद 5 मिनट का वक्फा लेना मत भूलें। इससे आपकी स्पीड में चंद दिनों के अंदर हैरान कुन इजाफा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, ये प्रैक्टिस रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए और प्रैक्टिस टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर पर करें, क्योंकि टेस्ट इसी एप्लीकेशन पर लिया जाएगा। इसका डाउनलोडिंग लिंक, अगर आपके पास ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसका डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। What is the right way of typing? टाइपिंग करने का सही तरीका क्या है? Okay, don't bend your hand while typing because it reduces the speed as well as pain your fingers. So always place your hand straight. दोस्तों, तस्वीर की बाईं जाने पे राइट वे है कि जिसमें आपकी उंगलियां सीधी हों, आपका हाथ सीधा हो। अगर आप इसको बेंड करेंगे तो इससे आपके हाथ में दर्द होगा और इससे टाइपिंग भी आसानी से नहीं कर पाएंगे। सो अपने हाथ को हमेशा सीधा रखें, इसको बेंड कभी भी मत करें। Another way of typing. Don't rest your hand on the keyboard while typing because it also reduces the speed. So always let your hand upward from the keyboard. दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त अपने हाथ को हमेशा कीबोर्ड से ऊपर रखें, कीबोर्ड के साथ टच मत होने दें, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। Which finger goes where? टाइपिंग करते वक्त कौन सी उंगली कहाँ रहनी चाहिए? Keep in mind the relevant keyboard buttons for each finger of the both hands and practice again and again based on this chart without looking at the keyboard. दोस्तों, ये चार्ट आपको
ये बताएगा कि आपके हाथ की कौन सी उंगली किस बटन तक जाती है, और जिस उंगली के अंदर जो बटन आएगा उसके अलावा आप दूसरी फिंगर के साथ उस बटन को प्रेस मत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाएगी। ये चार्ट आप अपने पास महफूज कर लें और इसी की मदद से अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करें। वेयर टू लुक वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते वक्त नज़र कहाँ रखनी चाहिए? डोंट लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग बिकॉज इन दिस वे you can't build the speed, so always look at the monitor screen। दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त अपने कीबोर्ड की तरफ कभी भी मत देखें, बल्कि अपने मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ देखें। अगर आप अपने कीबोर्ड की तरफ देखते रहेंगे तो इससे आपकी टाइपिंग स्पीड कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएगी। हाउ अ टाइपिंग टेस्ट लुक्स लाइक। टाइपिंग टेस्ट कैसा होता है या कैसा दिखता है? टाइपिंग टेस्ट इज मोस्टली टेकन ऑन टाइपिंग मास्टर फॉर अ पैराग्राफ टू राइट इन टाइम गिवन 3 or 5 मिनट्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी भी टाइपिंग टेस्टिंग सर्विसेज हैं, जैसा कि NTS, PPSC, FPSC वगैरह, ये सब अपना टेस्ट टाइपिंग मास्टर पर लेते हैं। और टाइपिंग मास्टर ये इस तरह का होता है जिसका 3 से 5 मिनट के ड्यूरेशन का एक टेस्ट लिया जाएगा आपसे, जो कि इस तरह का होगा। ओके, नंबर 1, कॉमन मिस्टेक एंड इट्स सॉल्यूशन। एक दोहराई जाने वाली गलती और उसका हल। मोस्टली कैंडिडेट्स डू नॉट रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द स्टार्ट स्क्रीन बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, and their test is considered failed due to their negligence. So, you must read all the instructions written on the start screen carefully before start button, and also those said by the examiner before starting your test, because instructions are for your own ease। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखी हुई और इम्तिहान अमले की जानिब से बताई गई हिदायत को गौर से सुनें और उन पर अमल करें। अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो आपकी इस लापरवाही की वजह से आपका टेस्ट फेल कंसीडर होगा, और अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इसमें आपका ही भला है। Another common mistake and its solution। एक और दोहराई जाने वाली गलती और उसका हल। Mostly candidates get stuck in 20 to 25 words per minute speed because they try to overcome mistakes irrespective of how long it takes to make that alright, and don't go ahead before rectification of all the mistakes। It's a good thing to have not a single mistake, but while training and increasing speed, you should only focus first on building your typing speed, and when you reach speed of 50 words per minute or above, which is gross speed of 50 words per minute or above, then now you should focus on accuracy। Accuracy is net speed or having no mistakes in your type paragraph। दोस्तों, अपनी टाइपिंग की गलतियों को ठीक करने के लिए बार बार रुक कर टाइम ज़ाया मत करें। पहले अपनी स्पीड बनाएं, और जब आपकी स्पीड 50 अल्फाज फी मिनट या इससे ज़्यादा हो जाए, जब आपकी ग्रॉस स्पीड 50 अल्फाज फी मिनट या उससे ज़्यादा हो जाए, उसके बाद अब अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करें और अपनी एक्यूरेसी को 100% की तरफ लेकर जाएं। ओके, अनदर कॉमन मिस्टेक एंड इट्स सॉल्यूशन। एक और दोहराई जाने वाली गलती और उसका हल। मोस्टली कैंडिडेट्स कांट कंट्रोल देयर ब्रेथ ड्यूरिंग टेस्ट एंड देयर हार्ट बीट स्पीड्स अप। Well, it's a common mistake of most of the candidates. You must try to cool down and take your test easy and control your nerves. Before you start the test or click the start button, long breath 3 to 4 times and try to normalize your heartbeat, and then start your test. Finish your test in as lesser breaths as less are possible for you. It would definitely nourish your nerves and increase the chances of passing the test to maximum।
दोस्तों एक और कॉमन मिस्टेक जो कि दोहराई जाती है वो ये है कि जो कैंडिडेट है वो अपने असाब पर काबू नहीं पाते और उनका सांस फूल जाता है टेस्ट के दौरान। चनाचा आपको अपने असाब पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए और टेस्ट शुरू करने से पहले 3 से 4 मरतबा लंबी लंबी सांस लें और दौरान इम्तिहान अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने की कोशिश करें और कम से कम सांस लें जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। Another common mistake and its solution, एक और दोहराई जाने वाली गलती और उसका हल। Mostly candidates used to look at the time again and again to check either they are covering the given paragraph on time or not, and they also look at others if they are typing faster than you or not. Listen friends, it doesn't boost your speed at all, rather you get hyper and start doing mistakes to get on time. So please focus on the paragraph you are writing and only see the time once you are on the very last line of the paragraph. दोस्तों दौरान इम्तिहान बार बार वक्त और अपने आसपास के लोगों के पैराग्राफ की तरफ देखने से गुरेज करें और सिर्फ अपनी स्क्रीन पर नजरें जमाए रखें। लेकिन जब आप अपना पैराग्राफ कंप्लीट करने लगें तो उस वक्त आप एक दफ़ा टाइम की तरफ ज़रूर देखें, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बार बार वक्त देखने से गुरेज करें। Another common mistake and its solution, एक और दोहराई जाने वाली गलती और उसका हल। Mostly candidates used to shake their legs and feet during their test. It also impacts the speed inversely. You must rest your feet on the floor and don't shake your legs at all during the test. It would enhance your concentration and would definitely boost up the typing speed. दोस्तों दौरान इम्तिहान अपनी टांगों और पाँव को जुम्बिश से गुरेज करें। अपने पाँव को दौरान इम्तिहान ज़मीन पर साकित रखें और अपनी टांगों को हरकत से बिल्कुल बाज रखें ताकि आपकी तवज्जो टेस्ट पर मरकूज रहे। एक और दोहराई जाने वाली गलती और उसका हल। Another common mistake and its solution. Mostly candidates used to wear tight dress for test day to look decent or something else. But you must remember that tight dress doesn't allow you to sit comfortably during tests, so you must wear loose clothes on the test day to give your test comfortably. दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए इंटरव्यू के दिन वाली ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि टाई पहनना या टाइट ड्रेस पहनना। टाइपिंग टेस्ट वाले दिन आप एक ढीला लिबास पहनकर जाएं जिसे पहनकर आप सुकून से बैठकर टेस्ट दे सकें। And one last thing, dear friends, giving a test is a task of nerves, so don't get rid of nerves. Don't fear of anything during the test. Focus one and only the monitor screen given paragraph during the whole test. I wish and hope that you would pass your typing test with a great margin, inshallah. दोस्तों अगर आप इन तमाम हिदायत पर अमल कर लें जो पीछे बताई गई हैं तो आप इंशाल्लाह टेस्ट में ज़रूर आसानी से पास हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने असाब पर काबू पाना चाहिए और अपनी नज़रों को सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन पर मुंजमद रखें। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टाइपिंग पैराग्राफ की तरफ रखें। इंशाल्लाह आप ये टेस्ट आसानी से पास कर लेंगे।